Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस स्ट्रीम। आज हम खेलने लगे गेंशिन इम्पैक्ट। और तुम लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक मेरे को देखना पड़ता है। एक मिनट देखने दो मुझे।
स्ट्रीम कितनी डिले पर है, तो एक सेकंड देखने दो बस। I didn't know you were such a slacker. ये गेम क्या मत करने दो। एक मिनट, स्ट्रीम अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। स्ट्रीम में डिले बहुत ज़्यादा है यार, इतना डिले क्यों आ रहा है? फिर लो लेटेंसी पे ना ये तो, मैं लो लेटेंसी पे स्ट्रीम कर रहा हूँ तब भी डिले बहुत ज़्यादा आ रहा है। पता नहीं क्यों। नेट भी अच्छा पर तब भी थोड़ी लो क्वालिटी आ रही है स्ट्रीम, थोड़ी सी लो क्वालिटी। और हमें ग्राफिक्स तो लो कर दे, ग्राफिक्स कैसे हो सकता है? हम लोग करते ऐसा डिफ़ॉल्ट पर ही ऑलरेडी। एक मिनट, यस एक मिनट, स्ट्रीम पे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट देखने दो। जस्ट सेकंड, तुम लोगों को नहीं आ रही मेरी आवाज़ क्या? ओके, तुम लोगों को अब मेरी आवाज़ आ रही है? वो इसमें से आवाज़ ही नहीं आ रही। एक मिनट, कुछ मेरे को कुछ आवाज़ नहीं आ रही यार, एक मिनट देखने दो। शायद मैं हेडफोन गलत कनेक्ट हो गया शायद, तो मुझे अपने हेडफोन सही करने पड़ेंगे शायद। देखने को देखने दो। ना सही कनेक्टेड है स्पीकर 2.2। वो किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ से साउंड ऑन है। एक कोई हाई भेजना, एक मिनट, एक सेकंड के लिए। कोई एक मिनट, मैं खुद को खुद भेजता हूँ हाय, क्यों मुझे स्ट्रीम में आवाज़ नहीं आ रही है? Zombie killer said hi. ना मैं हेडफोन सही है, मुझे टैब वापस खोलता हूँ मैं, क्योंकि शायद हो सकता है टैब की कोई प्रॉब्लम हो। और तुम लोगों को आई थिंक मेरी आ रही है। हाँ, इस टैब पे आ रही है मुझे आवाज़। तुम लोगों को नहीं आ रही मेरी आवाज़ क्या? हाँ, इस टैब पे आवाज़ आ रही है, उसको इस टैब में प्रॉब्लम होगी। मैंने न्यू टैब खोल दिया, एक मिनट। हाँ अब सही है। और थंबनेल देखा तुम लोगों ने, क्या मस्त बनाया भाई। मैंने थोड़ा टाइम लगा पर इसमें बना लिया थंबनेल लाइव। ये बताएं, अच्छा दिखा रहा है, पर थोड़ी देर पहले भी दिखा था पर लाइव नहीं दिखा रहा था, अब दिखा रहा है। क्या मस्त थंबनेल है यार, सही करने पड़ेंगे शायद। देखने को देखने को ये सब सही है। ओके अब सही है ना, अब सही है। तो आज की स्ट्रीम, सॉरी फॉर दैट, तो आज की स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोकोमी कोकोमी कोको मिल्क। तो ओके, आज की स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यस, आज की स्ट्रीम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सही है? हाँ सब कुछ सही है स्ट्रीम पे। तो हम लोग आज की स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। आज कोकोमी वाला हम खेलने वाले हैं क्वेस्ट। पहले हम लोग थोड़ी इनको मार लेते हैं, हेलीकॉप्टर्स को, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाल का वेपन अपग्रेड करते थोड़ा सा। F1 ये तो हो गया हमारा। और एनिमीज, हाँ इजी वाले, पर ये इजी किसी एंगल से नहीं है। हाँ ये रहे हेलीकॉप्टर वाले न्यू एनिमीज। Come on, let's get moving. भाई इतने We're not दूर, frozen in कोई place बात after नहीं। all. और यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसके बाद
स्ट्रीम बहुत डिले है क्या पीछे? हाँ थोड़ी डिले है स्ट्रीम आज की। आई थिंक मेरे को सेटिंग में छेड़छाड़ कर दी गलती से, जिसके कारण डिले हो रही है। मीको के बाद में आएंगे हम लोग, मीको के सेपरेटली आएंगे कभी, क्या मेरा टाइम नहीं होता। What's the hurry? रोमांस चल रहा है बिल्लियों का। सॉरी, हम लोग जाते हैं इनके पास, इनको मार के आते हैं और होप करते ज़्यादा आइटम ड्रॉप करे ये लोग। We can just hope. There is no escape. Dodge this! What's the hurry? ओके और इसके बाद हम लोग एक ही है यहाँ पे, तो और आगे होंगे पूरा एक सामने। इसके ऊपर एक है, बाद में कभी लेंगे। ओ फटू भी है। Shine down. ये डैमेज देखो कितनी हो रही है। Free! Push your luck! I got careless. Try. Picked the wrong test subject. ओके यार मैं हेल्थ बहुत लो है यार। The wrong test subject. एक काम करते How हैं हम लोग, fortunate! कुछ खा लेते हैं, जैसे कि कुछ नहीं है भाई मेरे पास, कुछ नहीं, इस बार से हो जाएगी, इजी है। What's the hurry? ट्रैवलर यूज कर लेंगे हम लोग। Cool it! Dodge this! इतने दूर रहना चाहिए हम लोगों What's the hurry? Free! ये कहाँ मार रहा है काया यार अपना? Illusion shattered. वो ट्रैवलर का बहुत Time to fight back, I suppose. यार मुझे ओ ये बहुत ज़्यादा, ये जब ब्लास्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। Wind blade! Cool it! कोने में गया, एक मिनट। Freeze! कोने में गया पानी के अंदर। मैं गया यार। Dodge this! रुक जाओ, मुझे बाहर निकल दे, यस। What's the hurry? Freeze! अरे पानी के अंदर पहुंचा तुम लोग। Dodge this! Cool it! ओके ओके, दूर जाओ उससे। मैं हाफ हेल्थ हो गया यार, What's the hurry? ऑलमोस्ट हाफ हेल्थ हो गया। से फाइट करते करते मैं हाफ हेल्थ हो गया। नाइस। तुम लोगों से फाइट करने का टाइम नहीं बस। यहाँ पर एक है, ये रहा, 2 है, यहाँ पर 3 है। Freeze! There is no escape. Dodge this! Cool it!
कितने उनको मार नहीं सकते, कैसे मारेंगे इन्हें? Freeze! कोई लीसा या कोई ऐसी कैरेक्टर होना चाहिए था। Don't get frostbite. Dodge this. Don't push your जैसे luck. ब्लास्ट होगा ना, मैं भूल जाता। Freeze. Dodge this. Shine down. Cool it. Go go berry bunny. यही तरीका है बस एक। वो क्या इजीली मरी इस तरीके से वो। या एक और है ना। There is no escape. हाँ ये रहा। ये ज्यादा ऊपर जाता है उस तरीके से मारेंगे हम लोग। Freeze. Illusion shattered. Let it rain. Dodge this. क्या रोके? एक ही रोके, मैं 1 सेकंड आता हूँ यार, मेरे को जाना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। ओके एक मिनट, कोई वॉचिंग? नो वॉचिंग। शाम अभी तक भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं है। वैसे आज का थंबनेल बहुत मस्त है ना। एक मिनट, थंबनेल में देखने दो कि यूट्यूब पे कैसा दिख रहा है। 1 मिनट। यस, लाइव। ये थंबनेल क्या मस्त लग रहा है यार आज का। मैंने मेहनत की है, इसका मतलब मैंने की मेहनत। कहाँ पे वो? ये रहे। ओ नो, ये क्या हो गया? Shine down. Illusion shattered. गया वो। ये इलेक्ट्रिक वाले बाप। Cool it. Oh, so soft. Freeze. Dodge this. ओके गया ये। और कितना अपग्रेड हो सकता है ये देखते हैं हम लोग सबसे पहले। और इसके बाद हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग? और ओके, एक और लेवल हो सकता है। एक और हो सकता है लेवल। देखना पड़ेगा हम लोगों को ये चीज़ें है या नहीं। शायद नहीं होगी, इतनी तो नहीं होगी। देखते हैं हम लोग। हमको ये वाले ट्रायल से नहीं, ट्रायल तो शायद हाँ हो जाएंगे वो तो। और जहाँ तक ये वाला चीज़ है शायद। 1 मिनट, कौन सा जिम है? वेपन 60 लेवल। और आज का लुक चेंज होगा ना, मस्त लग रहा है ये वाला लुक। और हाँ ये वाला चाहिए ना, ग्रीन वाला। और यहाँ पे हमारा कौन सा है? हमारे पास अच्छी ये वाले तो कलेक्ट करने पड़ेंगे हम लोगों को। और क्योंकि इससे एक ही बनेगा। और हमें टोटल कितने चाहिए? मैं माउस पर को साफ करेगा मुझे, थोड़ा सा कुछ गिरा हुआ है। ओके अब सही है।
हाँ कितने चाहिए ये देख रहा था मैं। मुझे 9 देखते हैं, कलेक्ट करते हैं, वैसे हो जाएंगे 9 ज़्यादा। Cool it. There is no escape. मैं इधर नहीं आ रहा, मैं एम्बर से मारेंगे इसे। Bet you can't keep up with me. ये की प्लानिंग है बुरी कि पानी ले आके मारेंगे इन्हें। Shine down. गया ये, गया भाई ये। हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं दो और अब उठाओ। नॉट बैड, दो ही मिलेगा, कोई बात नहीं। कहाँ पे नेक्स्ट? थोड़ा दूर है क्या? हाँ थोड़ा दूर है नेक्स्ट। इनको मार लेते फिर हम लोग जाते हैं। There is no escape. Don't get frostbite. Cool it. ये सब लोग देख रहे हैं बस, मैं तो मार रहा हूँ और भाई तुम लोग देख, Dodge this. मैं दोस्त को लोग मैं मार रहा हूँ और तुम ऐसे देख रहे हो। ये भी सही है भाई, दोस्तों तो ऐसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, फिर जरूरत ही नहीं है दुश्मनों की। हाँ ऐसे दोस्त होते। Quite the find. ओके, हम लोगों को क्या कोई टेलीपोर्टर नहीं है क्या? हाँ टेलीपोर्टर नहीं है, हम लोग को ऐसे ही जाना पड़ेगा फिर। चेस अनलॉक करते करते आता है। Illusion shattered. Freeze. गए लोग, सब लोग यहाँ से बोल गए और Fascinating. दो ये पर है, उठा लेते हैं। What's the hurry? Dodge this. Freeze. Oh, so sorry. Cool it. ओके ये हो गया और What's the hurry? बस ये यहाँ पे भी तो ये है, इनको मारते हैं सब लोग। Dodge this. पहले ये क्रेट खोलते फिर इनको मारते हैं। नहीं इसके कोई ऑप्शन आता ना, Quite the find. पता नहीं शायद आ रहा था, अब नहीं आ रहा। Shine down. Cool it. This moment will be frozen in time. Freeze. What's the hurry? Dodge this. Cool it. Oh, so sorry. Freeze. Don't push your luck. ये फूटेगा भी, बस हम लोग और ये लास्ट है। Dodge this. There is no escape. मैं डूब गया वापस। Don't push your luck. That's cheating. एम्बर यूज करेंगे जो क्यों यार पानी के अंदर यहीं पे आ जाना भाई, सच है। वहाँ मरेगा इतने दूर, तेरी फैमिली को पता भी लगेगा, तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये हट जाए तो हाँ अब सही है। और ओके अब सही है। और कितने होगा हमारे पास? बी और कहाँ गई है?
हाँ ये 12 से बनेंगे 4 और 4 + 6 मतलब 4 पर 2 6 होता है तो 6 तो बन जाएगा ना वेपन के लिए। नहीं 9 चाहिए ना मेरे को 6 से तो ना होगा 9 चाहिए मेरे को। Cool it! No one escapes my sight. Shine down. I'll never surrender. Freeze! Cool it! Freeze! हील हो गया व्हाट द हेल। Dodge this! Don't get frostbite! Cool it! Don't push your luck! Illusion shattered. Freeze! मैं गिरूंगा पानी के अंदर। Cool it! गाय ये फूटेगा ये और ये भी गया और ये फूटेगा और हम लोग उठा लेते हैं तो बाकी ये उठा लेते हैं। What's the hurry? ओके अब कितने हो गए हमारे पास? अब हो गए हम लोग 15 और 15 से बनेंगे 5 + 4 9 तो ये अब अभी का हो गया। हम बाद में आएंगे कभी क्राफ्टिंग टेबल के जाते हैं और हम लोग बिल्ड करते हैं और अभी कोकोमी का क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। और कोकोमी का क्वेस्ट खेलते हैं हम लोग कोकोमी। ये रही 12 ये बनाए 12 वो बनाना है और 12 ये वो समझ जाओ बस तुम लोग क्या मैं बोल रहा हूँ। कहाँ पर गए? हाँ इसमें ही होंगे। 12 ये बनाया टोटल में, टोटल 12 में 7 है हमारे पास तो हमें 5 और चाहिए। और 5 बन गया और एक एक्स्ट्रा बन गया। और हाँ ये बनाना है ना हम लोगों को 9 ये बनाना है तो क्या देखते 2 एक्स्ट्रा बन गए कोई बात नहीं। नाइस वेपन इंचेंट हो गया। वेपन इंचेंट 10 और लेवल हो गया इसका। ओके बस अब ये भी हो जाएगा पर अभी भी हो सकता है पर अभी बस खेलते आ जाओ। Over and over again. का क्वेस्ट खेलते हैं हम लोग सबसे पहले नेविगेट और भाई हील करके आते हैं यार क्योंकि ऐसे हालत में कोकोमी देखी क्या बोलेगी इसलिए लोग सबसे पहले हील करते हैं फिर कोकोमी का क्वेस्ट खेलेंगे। और क्योंकि स्ट्रीम उसी बारे में ना 130 हो गया और अभी तो कोई आया नहीं स्ट्रीम पे ये भी ठीक है। ये छोटी जाना कंप्लीट 15 डोमेन्स कितने टाइम बचा 18 ना से वीक के 4 डेज बचा ना वीक में तो ये तो हो जाएगा कंप्लीट 20 टाइम। ये लाइन चैलेंज कौन सा कुछ 20 जैसे ये भी हो जाएगा हो जाएंगे ज़्यादातर तो। और अगर इनमें से क्या बचा होगा कंप्लीट ये भी हो जाएगा शायद। इसको हटा देते हम लोग नेविगेशन से।
इससे क्लोजेस्ट यही है। आ जाओ, इससे हम कोकोमी में क्वेस्ट खेलते, कल ही आया और आज खेल लेंगे हम लोग। इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है? अच्छा, कुछ लोग तुरंत खेल लेते हैं आते से, मैं नहीं खेलता यार। ओके, हम लोग होने दो लोडिंग। हाँ, लोडिंग हो गई, हो गई। भाई मैं सुनना चाहता हूँ, क्वेस्ट खेलने में बहुत मजा आता है मुझे। ओके, ट्रैवलर नॉल भी घूम रहा है इधर। This should be where Kokomi said to meet her. Do you still remember this place? Paimon remembers we came by here last time we visited Watatsumi Island. That was back when you did your stint as captain of Swordfish too. Paimon's curious whether the resistance troops still remember you. Things on the island must have changed a lot since then. Oh, shall we take a look around? Yes, इसलिए तुम लोग आए हैं। If the enemy outnumbers you, seek their weakness and exploit it. If you outnumber the enemy, seek unequivocal domination and crush them. Marauders on the waterfront are supplied by sea. Burning their ships is the path to success. General Goro, sir, do you have a verdict? More or less. From the directives left behind by Her Excellency, we can surmise that a Fatui ship is moored nearby. This explains their aggressive posture. We could split into two teams, one to draw their attention and the other to circle around behind enemy lines and set fire to their ship. They'd have nowhere to run. Then again, Madame Kokomi made clear that we are not to split up without sufficient forces. We'd risk being picked off one by one until our whole line of defense disintegrated. Sir, shall I send for reinforcements? I doubt there's time. Based on their movements, they'd likely be gone before our troops arrived. Her Excellency's directives also stipulate that we should wait in ambush and avoid making the first move. Since we lack sufficient troops, I don't think we can afford to engage the enemy at this time. Sir, we're just gonna stand by and watch them leave? Surely there must be another way. Her Excellency's directives also state help may arrive when all seems lost. As for where this help is supposed to come from, Hey, Goro! What are you guys up to? Captain, you've returned to Watatsumi Island. You can do it. Tatsuna Island, yes. That's great! Her Excellency's directives are as reliable as ever. You've arrived just in time. Recently, the remnants of the Fatui forces have been unusually active. We've been monitoring their movements, waiting in ambush here. Unfortunately, we don't have the manpower to split into two teams. Can we ask you to keep them occupied? Yes. Hard to say no when it's the Fatui. Whatever they're planning, we won't let them get away with it. Good. There's not a moment to lose. We'll go behind enemy lines and sabotage their ship. Let's meet back here afterward. Okay. Watch yourselves. We'll be back shortly. Seems like the Resistance still remembers us. Come on, let's help them get this situation under control. हाँ, एक चीज दिखनी करा पाया का क्या है ये? Details 140. What's the hurry? हमें यहाँ जाना है ना? हाँ, यहाँ जाना है ना? या पजल भी एक है। इसको घुमा सकते हैं? नहीं, कुछ सब में सकम उस तरफ होना चाहिए ना। हाँ, इनका तो नहीं हो सकता भाई, कुछ का तो पता नहीं क्या है इस पर। बाद में देखेंगे कैसे बिल इनको हराता है। Shine down! Dodge this! This moment will be frozen in time. पहले इसको मारता है हम लोग। Cool it!
Freeze! Let it rain. अच्छा आइस वाला है ना? Cool it! There is no escape. Freeze! They've set the ship on fire! An arson attack! Curse them! They leave us no choice but to attack! Come, lads, let's make them regret it! Leviathan the Sea Dragon. Freeze! Said bro, don't you play Valor anymore? कल रात को तो खेला था वैलोरेंट में, आज रात को खेलूंगा वैलोरेंट में। Bro, you don't play Valorant anymore? खेलता हूँ मैं कल रात को भी खेला था, आज रात को खेलूंगा मैं। सुबह मैं गेंशिन पे खेलता हूँ, रात को वैलोरेंट खेलता हूँ, या कभी सुबह कोई दूसरा गेम भी खेलता हूँ। तो वैलोरेंट रात को खेलता हूँ मैं। Dodge this! There is no escape. Leviathan the Sea Dragon. Said Subkul Sakta. सब खेल Leviathan the Sea Dragon. Said Mir Sad. मैं एक मिनट, आपको मैं आईडी एक काम करो, मैं आपके साथ खेलते 3 बजे खेल लूँगा। आप मेरी आईडी नोट डाउन कर लो, जो ID1 है जो डिस्क्रिप्शन है वो आईडी में आप रिक्वेस्ट भेज दो, मैं आपके साथ 3 बजे, हाँ 3 बजे खेल लूँगा, क्योंकि अभी तो मैं ये खेल रहा हूँ। ओके। Leviathan the Sea Dragon. Said hi Mir Pa. You're my Leviathan the Sea Dragon. Said you're my friend. यस, वैसे नाम क्या है आपका? इन गेम नेम रहता है, फिर जिस नाम से आपको मैं जानता हूँ। Leviathan the Sea Dragon. Dodge this! Said One Punch Man. ऐसा वन पंच मैन। What's the hurry? ओके, हम लोग खेलने के, अब डिस्कॉर्ड पे मुझे बोल दिया, मैं आ जाऊँगा। What's the hurry? Freeze! This moment will be frozen in time. ओके, ऊपर जाना है शायद हम लोगों को। हाँ ऊपर नहीं, इसके पास जाना, गुरु के पास। वन पंच मैन ओके, मैं आकर खेल लूँगा। एक मिनट मैं चैट पॉज कर रहा हूँ। हाँ, We were lucky to have you here. We'd have no way to prevent their escape without you. What's that you're holding? Is it the directives from Kokomi? Let Paimon see. Oh, wow. This is a whole book. Is it all Kokomi's directives? Yeah. Well, no, not all of them. I have 5 more volumes with me. Are you serious? 5 more Her volumes. Excellency always plans for every scenario. Plus, these are her general operational directives, which are more comprehensive than most. Still, we're fortunate to have them. They make sure we're prepared for every eventuality, no matter how complex. Oh, understanding every eventuality sounds tiring enough, let alone writing them all down. Must have taken Kokomi a heck of a long time. Captain, are you back on Watatsumi Island to lead Swordfish 2 again? We've all been feeling your absence. हम लोग जॉइंट कब हुए थे? जब वापस आएंगे हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं उसके लिए। उसमें तो 2 लोग थे मुश्किल से, और हम मिला के 3। वो कुछ कोई टीम नहीं बोलते यार।
Her Excellency says that now is a time of peace, and that we should reduce the size of the military and focus on helping the civilian population return to normal life. About half of us are still organized into task forces, supporting the platoons. The other half have been given various other functions like patrol, construction, and farming. Of course, not everyone's happy about it. The other day, an old buddy of mine was grumbling about being forced to build houses. Said they'd have to drag him away from the front line, kicking and screaming. The spirit of the resistance is alive and well, huh? Anyway, we're here because Kokomi invited us to the victory feast. Do you know where we could find her, Guru? Victory feast. I believe Her Excellency is currently at Boro Village. There were reports of a possible disturbance over there. If I'm not mistaken, Her Excellency has gone to deal with it in person. We should probably get going ourselves. And, also, on your way over, please check in on the soldiers. I'm sensing a growing unease among them, but I don't know what's causing it. They won't say. They used to tell me all their concerns, but whatever this is, they're keeping it hidden. Sure, I will. I don't like it one bit. Can do. I suspect there's trouble afoot. Sounds good. Paimon was just thinking it'd be good to see everyone again. Ready when you are. ये हो गया? Okay. Okay, अब chat में on कर Ishin Senpai. Said Yo boi. Ishin Yo. Senpai. Said late Hagyafak. कोई बात नहीं करो. Leviathan the Sea Dragon. Bro तेरे Said bro Terra net lag car RHA high. लैग कर रहा था. हाँ वो थोड़ा सा में नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी. पता नहीं क्योंकि अगर तुम लोगों को मैं दिखाऊँ मैं नेट पता नहीं कुछ वो मेन नेट की सर्वर नेट की प्रॉब्लम नहीं है वो मेरी कि कुछ OBS का इशू है नहीं तो जल्दी यूट्यूब का कोई इशू है क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को अपनी स्पीड दिखाऊँ 1 मिनट ये गेम पॉज कर देता. हाँ तुम लोगों को अगर मैं अपनी स्पीड दिखाऊँ भाई इतनी अच्छी स्पीड आ रही तुम लोग बताता हूँ. थोड़ी सी कम आ रही नॉर्मल से पर तब भी सही आ रही है. 1 मिनट ये देखो भाई मेरी स्पीड मैं देखा 27 या 28 कुछ आ रही है. डाउनलोडिंग ये डाउनलोडिंग स्पीड होता है. अपलोडिंग स्पीड देखो क्योंकि डाउनलोडिंग भी बहुत अच्छी आ रही है पर तुम्हें स्ट्रीमिंग के अपलोडिंग स्पीड की जरूरत है. Leviathan the Sea Dragon. Said oh okay. थोड़ी सी कम आ रही है पर तब भी इतनी नहीं आ रही. वो यूट्यूब का ग्लिच है. यहाँ पे और कम दिखा रहा है तो 2 MB दिखा रहा है और अगर मैं यहाँ से देखूँ तब भी मैं 13% नेटवर्क यूज़ हो रहा है टोटल. मतलब कम ही यूज़ हो रहा है. फुल नेटवर्क ये यूज़ कर ही नहीं रहा. पोटेंशियल मतलब 23 Mbps. वो यूट्यूब का कुछ ग्लिच है पता नहीं कब फिक्स होगा और ऐसे ही यूट्यूब पे ग्लिच आते रहते हैं हमेशा. और मैं फुल स्क्रीन पे मैं भूल गया था. मैं फुल स्क्रीन पर हूँ. कैंची पे अब सही है. ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. और ईशान भाई तो तूने क्वेस्ट खेल लिया कोकोमी वाला क्या? कोकोमी वाला Ishin Senpai. Said Vi Kokomi Kesilji. कोकोमी कैसी लगी अभी खेलूंगा उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी कर मुझे इतना पता नहीं क्योंकि जब अगर जो मेन क्वेस्ट था उसमें तो उसने कुछ मदद की ही नहीं. मतलब सिर्फ एक बार बचाया था उसने पर कोई मदद नहीं की उसने. सारा काम ट्रैवलर ने किया था तो पता नहीं अभी तक उसका. और मैं स्टोरी की जब भी स्टोरी होगी तब मैं तुम लोगों की चैट पॉज कर दूंगा. मैं भी मल्टीप्लेयर नहीं खेल रहा. मैं भी स्टोरी खेल रहा हूँ. सॉरी यार मैं भी स्टोरी खेल रहा हूँ. और इसका जाता हम लोग. मैं स्टोरी के बाद मल्टीप्लेयर खेलता हूँ. Wait, aren't you Captain of Swordfish too? Yes, I Oh, it am. is you! Oh, you have our gratitude. Watatsumi Island wouldn't have come to peace without your efforts. I wasn't with Swordfish too, but I did see you in Tatarasuna. हम लोगों ने सब कुछ किया है. Oh, you really gave it to those shogunate samurai in the fight of honor. Oh, it was quite the show. पहले किया होगा हमारे आने से पहले पर
ज़्यादातर काम ट्रैवलर ने किया पर इतना भी नहीं. Is there anything you need from me? I'm at your service. और by the way शान तूने क्या ये क्वेस्ट खेल लिया क्या? I heard people a bit. On edge, you say? Oh, yeah. Yeah, I've noticed it too. Okay. In fairness, the battle isn't long over, and, well, perhaps it isn't quite over for them. You know what I mean? Every single person looked death in the face that day. It's not an experience you forget in a hurry. Victory's declared, and all of a sudden, the fighting's over. But people can't just snap back into normal life again. I think things will improve, but it's gonna take some time. I don't know what else it could be, but what I do know is that as long as Her Excellency is with us, Watatsumi Island is safe. And all the more so now that you're back. Seriously, if there's ever anything you need, just say the word. What a nice guy. Let's go ask some other people. Oh, nice. और लैग करी क्या स्ट्रीम में? बाद में मुझे ये बताओ, लैग करी है क्या? अगर लैग करी तो बताओ मुझे, लैग क्या अनक्लियर हो? तो अनक्लियर तो थोड़ा सा होगा ही. अगर लैग करो तो मुझे बताओ, मैं कुछ देखता हूँ फिर उसके बाद अगर लैग हो रहा होगा तो. What's the hurry? अच्छा मुझे लिस्ट से आगे जाना था बस. अब इससे बात करनी होगी मैं. Swordfish too. Peace at last. Living the dream. Living the dream. Don't I know you? Ishin I've Senpai. definitely seen you somewhere Said Avi Kalunga before. Quest. Can't place you, but I'm guessing Okay. you're not with the Abhi Shogun's army. खेलूँगा quest. So, Okay. do you need something? तो स्पॉइलर मिल जाएंगे अगर तुम स्ट्रीम देखेगा तो. तेरे को फर्क नहीं पड़ता तो देख ले मेरी स्ट्रीम. ये तो तेरी चॉइस है. Okay. So you need something. I'm here to. I hear people are feeling Unsettled? Moment. Unsettled how? I haven't noticed anything. Not that I would, necessarily. I keep to myself, mostly. They're all too rowdy for me. We're at peace now, finally, and I, for one, intend to make the most of it. My life right now is about two things and two things only. The sun and the sea breeze. Sun and the sea breeze. और हाँ मुझे एक चीज़ पूछनी थी, क्या थंबनेल कैसा है यार? मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका थंबनेल. तुम्हें कैसा लगा थंबनेल? बहुत प्रोफेशनल फीलिंग आ रही है एकदम थंबनेल में से. Sorry that I can't be more help to you. I'll tell you someone you could ask, though. Sangonomiya. She knows everything. Sangonomiya Kokomi. Seems he's about to fall asleep. Let's leave him to rest and go find someone else to ask. Okay. Kokomi कब आएगी? Kokomi, I'm coming. I don't understand what Her Excellency is thinking. I mean, peace talks? Give me a break. Why would she agree to that? Peace talks. Exactly. Everyone knows you can't trust the Tenryo Commission. I heard they've been secretly coordinating with the Fatui and plan to continue their attacks. Wait, for real? You're sure of this? Positive. Some of our guys had a run-in with a few Fatui. They caught them conspiring together firsthand. I knew it! The Tenryo Commission are a bunch of crooks. They'll never change. Honestly, it's kind of naive for Her Excellency to take them at their word, isn't it? Shh! Keep your voice down. Someone's coming. Hey there! What you talking about? Captain, you're back. Yes, I'm back. What's new? हम लोग कैप्टन जी का काम एक बार भी नहीं किया कि किसी ऑर्डर दिया या कुछ किया. Anything to report? Do you think we should tell the captain about what we were discussing just now? बोल दे भाई. No, let's not mention it. He's one of our closest advisors. For all we know, the peace talks could have been his idea. I'm sure the captain would see where we're coming from, but you're right. We should probably play it safe. Welcome back to Watatsumi Island, Captain. Nothing to report here. Everything is A-okay. Her Excellency should be in the village at present. Head straight over if you wish, Captain.
Okay. Paimon definitely detected some hush-hush going on there. Hush. But if they aren't gonna talk, we might as well head over to the village. Okay, हम लोग विलेज की तरफ जाते हैं. डायरेक्ट विलेज के पास जाओ ना इतनी. यार कोकोमी से बात करनी है यार. तो डायरेक्ट विलेज की तरफ जाओ और किसी बात मत करो. डायरेक्ट विलेज की तरफ जाओ. ना सुननी दूसरों की बात. Admit it! We know you've been secretly supplying the Tenryou Commission with goods purchased on Watatsumi Island. I knew something was off about a Tenryou Commission merchant doing business here. So, what do you have to say for yourself, huh? I'm innocent! Ha! You're as guilty as they come. You never should have been allowed to set foot on this island, let alone do business here. Take him away! Hold on. Wait. Oh, yes. Kokomi, there you are! Something's going down over here. You should take a look, pronto! Your Excellency, this merchant is suspected of criminal activity, so we seized him for questioning. Our surveillance shows that in his whole time here, he has made numerous purchases, but no sales. And yet he has no stock in his possession. We believe it's highly probable that he has been supplying the Tenryou Commission behind the scenes. I haven't. तो क्या किया supplies का That will तूने? do. Let's not let ourselves get too worked up here, shall we? Everyone take a deep breath with me. In and out. Better? Matsuda, Uchimura, I understand that you're concerned for the safety of Watatsumi Island. But before we make any decisions over whether this merchant is guilty or not, we must give him the chance to explain himself. If he's guilty, of course, there will be consequences. But if he's innocent, he doesn't deserve to be falsely accused. This is Watatsumi Island. We deal in facts, not opinions. Excuse me, sir. As you know, my subordinates have some concerns surrounding your commercial activity here. Perhaps you could explain your side of the story to help me reach a verdict. Of course, I can explain everything. Yes, exactly. I'm a trader on the island, so naturally I built up some inventory. I was planning to hold off on selling until the prices went up, but then but then I was robbed by the Fatui. They took everything. Now you think about that. झूठ बोल रहा था, फिर First दिखा I दिया. lose all my inventory, then I get treated like a criminal. And why should we believe you? Oh, on the way here. So what? That doesn't prove they took his goods. And even if they did, it'll still end up in the Tenryou Commission's hands. They're in this together. What? The Tenryou Commissioner colluding with the Fatui now? This is the first I've heard of it. I suppose it is true. What's that got to do with me? What, the Tenryou Commission start colluding with the Fatui after the fighting's already finished? Seems unlikely to Paimon. We met a representative of the Kujo clan recently. पता कैसे लगेगा झूठ बोला Doesn't सच seem बोल like रहा. he'd have the time to be colluding right now. नहीं मालूम किसी को भी. But on the way over here, we accidentally on purpose overheard some soldiers mention the exact same thing. Kokomi, do you know anything about it? It has been brought to my attention, yes. We are scheduled to begin peace talks with the Tenryou Commission soon. The Kamisato clan has arranged for them to take place in a neutral location. Kujo-Sara and I will be accompanied by our guards. We will use the talks to discuss future plans in detail. But just as arrangements for the peace talks began to fall into place, I started hearing rumors of collusion between the Kujo clan and the Fatui. Allegedly, their goal is to completely wipe out Watatsumi Island. If that's the case, then the peace talks are likely a trap. Even the Kamisato clan could be involved. Sir, सारा नहीं करेगी are you शायद ऐसा. quite certain that your goods were stolen by the Fatui? Yes, it's the truth. I swear. They stole my goods and then they ran off that way. Yeah. But that's where the hideout is. Very well. The potential ramifications of this incident are serious. We will retrieve your goods, and if everything is in order, it will prove your innocence. However, if we find evidence to corroborate the claims of collusion between the Fatui and the Tenryou Commission, I expect you to fully comply with our investigation. Do we have an understanding? Yes, of course.
Thank you, Your Excellency. Matsuda? Uchimura? Well received, Your Excellency. Good. Now, Traveler, I mean, Captain of Swordfish Platoon Section 2, would you join me in the investigation? Yes, of course. इसलिए तो आज हम लोग इसलिए टाइम निकल के आए भाई. Good. I look forward to seeing how you've progressed lately. I also have a few new things to teach you. Ishin Senpai Alright, follow me. said I want Kokomi. I want Kokomi. तो विश कर दे, उसके लिए मिल जाएगी. देखो अगर तेको चाहिए तो विश कर दे, अपने कान बंद कर और विश कर ले. किसी की सुन मत, क्योंकि अगर देखो असली में चाहिए कोकोमी तो सुन मत किसी की, कि डैमेज कम देती है. तेको जो भी करना अपने हिसाब से कर और तू कर ले विश भाई. अगर वो तेरे लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, अगर देखो चाहिए बैडली तो. कोकोमी If we do find the merchant's goods in the hands of the Fatui, it'll prove he's innocent. Whatever's going on between the Fatui and the Tenryou Commission, we need to get to the bottom of it. और हाँ, मुझे एक चीज़ पूछनी थी. मैं तुझसे पूछी थी ईशान कि थंबनेल कैसा है आज का. मुझे बता, बस ओपिनियन चाहिए था कि थंबनेल कैसा है आज का. What's the hurry? तुम लोग ने कुछ नहीं देखा? ये डांट रहेगा हम लोगों को. तूने कुछ नहीं देखा भाई? तुम लोग कुछ नहीं देख रहे हो ना, गारंटी. मैं तुम लोगों को आगे सामने से चुरा के जा रहा हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को. एक तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे लोग हैं, नहीं तो इन लोगों को दिख नहीं रहा है. दोनों से कोई एक चीज़ हो सकती है. स्ट्रीम बहुत पीछे है यार. अभी स्ट्रीम अभी तक यही बहुत है. अभी तक स्ट्रीम बहुत पीछे है. स्ट्रीम अभी यहाँ पर इस पॉइंट पर है. लेटेंसी कितनी है भाई इस पे यार? आज लेटेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है. सॉरी फॉर द लेटेंसी गाइस. और देखो कोकोमी तो कर ले तू विश. What's the hurry? ये बाद में करेंगे हम लोग. पहले फटू से को मारते हम लोग. This must be the Fatui camp that the merchant was talking about. From the looks of it, it used to be a hilichurl camp. Who knows why the Fatui occupied it? Looks pretty heavily guarded. How are we supposed to get in? Not by brute force, that's for sure. But that's not a problem. The terrain here gives us an advantage, and we haven't given away our position so far. Our enemy is in the light, while we are in the shadows. Strategically, we have the upper hand. And what does that in mind? Strategy in mind. I think we have 3 options available. Option 1. Take the king, and it's checkmate. The Fatui's presence in Inazuma is weak at present. Nothing more than a few scattered remnants. If we strike from above and take down their leader first, the rest of them will be hard-pressed to put up a serious fight. Okay. Option 2. Hit them where it hurts. Over there, for example, a store of gunpowder cakes. If we manage to discreetly set the gunpowder alight without alerting them, it would deal them a devastating blow. They'd be caught completely off guard. Both their morale and fighting capacity would be severely impaired. Option 3. Use the environment against them. We're close to the sea here, so the air is very humid. I can gather the water vapor, you add a touch of lightning, and together we can shock them into submission. Wow, that's our grand strategist.
It's a lot to think about, though. Which option should we choose? That will depend on our assessment of our own abilities. A surprise attack from the air is the quickest solution, but requires superior combat skills. Ishin With Senpai. an explosion, we Said could thumbnail rapidly off reduce hot. their numbers without a protracted Ishin battle. Senpai. But Said but thoda or absolute di ya stealth host would be to hot. required during the operation, or we'd risk exposing ourselves. थंबनेल ओपी है पर तो और बढ़िया हो सकता है। मेरे को तो बहुत मस्त लगा आज का थंबनेल। ठीक है, तो इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है तेरे हिसाब से, तो मुझे वो भी बता देना। और मैं स्ट्रीम बहुत देर चली थी, देखो तो अभी मुझे बता रहा है। आई थिंक 2-3 मिनट पहले बोला था। मेरी स्ट्रीम माय बैड, मेरी स्ट्रीम बहुत पीछे है। If we decide to take advantage of the environment, we should be prepared for a lengthy siege. So, which is your preferred option? Air raid. There's the swordfish captain I know. Every confidence in your abilities. हम डायरेक्ट मार It's सकते हैं। decided then. Let's fight this one together. अच्छा खासा रेट है I'm no डैमेज। warrior myself, but I can still provide some support. I certainly won't be dropping you into battle all by yourself. तो वॉरियर नहीं है। We should take them down as quickly as possible and retrieve the merchant's goods. Okay. Oh finally! और मुझे एक चीज़ देखनी होगी, एक चीज़ देखनी है। ये सब तो होता रहेगा। मुझे एक चीज़ देखनी है। हाँ। अगर मैं अच्छा इसका क्यू यूज़ नहीं कर सकता ना अभी। मेरे को देखना था अगर मैं इसका क्यू यूज़ करूँ और पानी की ओर गिरूँगा तो क्या होगा। और फाइनली लोगों को कोकोमी खेलने को मिल गई यार। इनको मारते हैं पहले। क्या मैं कहीं पे भी लेके जा सकता था? अच्छा मैं कहीं पे भी लेके जा नहीं सकता कोकोमी को। ओके, इतने एरिया में लेके आ सकता। अगर मैं उनको इधर बुला लूँ तो एक मिनट। बी नहीं, सी मुझे देखने दो। इसका डिटेल देखने दो मुझे। ओह क्रिटिक माइनस। इसका क्रिटिक असलियत माइनस में। इसका माइनस में क्रिटिक रेट है असलियत में। वेपन कौन सा इसका? डोनट, फ्लाइंग डोनट। इसका क्रिटिक माइनस में। C3 है ये ऊपर से। ओवर हो गई। मेरे को यकीन नहीं हो सकता मियो कर सकता है सब कुछ। इसका क्रेडिट असली माइनस में। इसकी ये भाई बहुत सही था। बाल Rest and rebuild! Dodge this! Shine down! हाँ पर इससे एक चीज़ हो सकती है, तुम लोग बताता हूँ कि समय कोकोमी से एक चीज़ कर सकता है बस। अगर तुम्हारा बाल हो तो, पर तुम्हारा दोनों होगी नहीं। अगर तुम F2 लो तो तुम लोगों को बताता हूँ। पहले बाल का ये यूज़ करो और तुम्हें इसका एनिमेशन देख लो क्या मस्त है। क्या इसका एनिमेशन देख लो क्या मस्त है। तुम लोग देख लो इसका एनिमेशन। ठीक, बहुत हो गया ये। अब हम लोग फाइट करें। हाँ हमने इसको मारना है सबसे पहले। मैं हेलो Freeze! Illusion shattered! Cool it! Hold the line! Freeze! ये हीलर थी। एक मिनट, ये हील क्यों नहीं हुआ?
The king is overthrown. Only the pawns remain. ये heal क्यों नहीं हुई? What the hell? Healer है ना, ये heal क्यों नहीं हुआ? एक मेरी heal असली में नहीं हुई. कोई बात नहीं. चलिए इसको मारते हैं. What's the hurry? Oh, so sorry. Freeze. Dodge this. No one escapes my sight. Freeze. तुझे ये मारेगी, कोकोमी मारेगी. Allow me. कोकोमी मार देगा वो. पर वो heal क्यों नहीं हुई? Excellent work. वैसे स्ट्रीम कितने पीछे है यार. All thanks to your genius tactics. Genius tactic. Actually, even the best tactics live or die on the strength of those executing them. Winning a battle takes a concerted effort from everyone involved. Everyone. Victory never belongs to a single person. Now that you mention it, Paimon did make a pretty big contribution, huh? I bet. Hey! I must admit, I wasn't expecting to find the Fatui laying low in a hilichurl camp. Presumably, they've been operating out of here in secret for quite some time. What's their objective? वही तो ढूंढ रहा हूँ लोगों को. Are the soldiers right? Could they really be in collusion with the Tenryou Commission? हो सकता है. Let's scour the camp for evidence. If the merchant's story is true, the inventory should be here. All right, time to take a look around. बोर्ड के ऊपर है ना वही चीज़ तो. बोर्ड के ऊपर. कोकोमी, मुझे बात करनी है. कोकोमी. Not bad. Not bad. क्या करता रहता है स्ट्रीम पे यार. स्ट्रीम पे हूँ मैं. So these are the Fatui food supplies? Yes, food supplies. Whoa! This place is chock full of... Hey, हो look गया. here! मिल गए. Could these belong to the merchant? हाँ यही होंगे. There's a lot of stuff. जैसे Some of बोल it रहा has था the Tenryou Commission emblem. Yep, this has gotta be it. Okay, और Kokomi! Kokomi! We found the merchant's stuff! Look! I see. इसका क्या क्यों तेगा? I see. What are you thinking? Oh, nothing. I just zoned out for a moment. Let's see here. Yes, these are the stolen goods, all right. Food, medicine, farming tools. All essential for post-war recovery. He was probably stockpiling them until he could make a handsome profit. By contrast, it's doubtful that the Tenryou Commission has any need of these items, so the idea that he was supplying them doesn't make a lot of sense. In all likelihood, he's just an opportunistic merchant. Nothing quite as scandalous as Matsuda and Uchimura had imagined. He's hardly a saint, though, right? How could he stockpile things that people are desperate for? तो वो भाई तो ऐसे बात कर रहा था तो लगा होगा उन लोगों को शायद. We're not just gonna give them back to him and let him go, are we? It doesn't feel right. Don't worry. I had already foreseen this. In my recently issued post-war temporary decree, I included restrictions on the prices of essential everyday goods. These items will ultimately reach the people at a reasonable price. If he had taken the time to read the decree, it's unlikely he ever would have ended up in this predicament. तो उसको वापस नहीं मिलने वाला सामान. Kokomi, you think of everything. वो समझ नहीं आया यार. I wish that were true. Take this alleged collusion between the Tenryou Commission and the Fatui, for example.
I'm still completely stumped. The low energy doesn't exactly help. The low energy doesn't. Huh? What do you mean by that? Nothing. Nothing. Come on, let's take the goods back. Goods back. Okay. It's not long now until the victory feast. It'll be a race against the clock to get all of this resolved before it starts. Got it! First we mend the peace, then we attend the feast! Nice. तो क्या बोला अभी इसने मुझे वापस नहीं सुना वातात्सुमी आइलैंड में घूमते हैं हम लोग give the cargo back to the merchant वाला अच्छा तो मिल रहा है सामान वापस merchant को अच्छा तो जो एक्स्ट्रा सामान होगा जो फटी का सामान होगा वो बेचने वाले शायद merchant का सामान उसे मिलेगा वापस ये हो सकता है मैं तो ध्यान दूंगा आपसे स्टोरी पे यार क्योंकि जब मैं स्ट्रीम पे रहता तो उस पर भी ध्यान नहीं दे पाता जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था तब मैं पूरी स्टोरी पे ध्यान से देख के खेलता हूँ मैं बताता My goods! You got them back, huh? Thank you, Your Excellency. And thank you, Captain. You see? I told you I was innocent. I'm not so sure. You could have easily planned the whole thing with the Fatui in advance. Based on the information we gathered from the Fatui camp, there's nothing to suggest he had any correspondence with them. Had it been the case, then knowing how the Fatui operates, they would have left some evidence of it. But what if... What if? No ifs, no buts. We've recovered the goods. As agreed, this is sufficient to establish his innocence. No if, no buts. BUTS है और जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है Apologies. मेरे को सुनाई देता मेरे को buts सुनाई देता Guess we got carried away. What did I tell you? You army numbskulls don't have a clue. All brawn Okay. and no brains, coming to me with your crazy conspiracies. Lay off me next time, got it? अगर हम लोग ने Sir, मारेंगे I'm उसे afraid you're getting ahead of yourself. You may be innocent of the accusations originally leveled at you, but hoarding essential goods is a crime under the temporary decree. You must bear the consequences. Okay. You have already admitted to being the owner of these goods, so we are obliged to respond with appropriate measures. In addition to enforcing the sale of these goods at the accepted चेहरा rates, देखो there will also be a fine, the amount of which... Wait, Your Excellency, whose side are you on here? I have no business taking sides. As the divine priestess of Watatsumi Island, I abide by the principle of clear and consistent rewards and punishments. Just as merit must be recognized, mistakes must be penalized. You may have been proven innocent of the more serious allegations leveled at you, but this does not exempt you from bearing the consequences of your mistakes. Wait a minute, Well, don't just stand there. Take him away. Time to pay up. Your Time to pay Excellency, up. he says all the goods belong to him, but it doesn't add up. Those of a Tenryo Commission emblem are probably his, but not the rest. Especially these ones. They're clearly for shrine use. ये confusing हो रहा है यार They simply dumped all their stolen goods in one place. Leave the shrine paraphernalia to me. As for the rest, I'll leave you to sift through and try to track down the owners. I know, that's a lot to ask. Not at all, Your Excellency. We're on it. But if I Kami. may, Your Excellency, maybe there were no signs of collusion in this case, but our people know what they saw. Something is going on between the Tenryo Commission and the Fatui. I know the peace talks are coming up, so please keep an open mind. I understand your concern. I'll be sure to give it further consideration. I'm going to take these items back to the Sangonomiya Shrine. Okay. Why don't you come along for the walk? Okay, मैं आ रहा हूँ of course मैं आऊँगा मैं क्यों मना करूँगा अगर तुमसे कोई पूछे Watatsumi Island observes different customs than the rest of Inazuma. I imagine it must all seem a little alien to you. alien तो alien बोला भी शायद ना normal ये भाई
It's been a long time since I last came to this village. There's been a lot to deal with recently. Next time you visit, I'll take you to visit Watatsumi Island's old shrine. Old shrine. निको वाली मतलब जा चुका मैं उधर. इसकी बॉडी देखो भाई. ये क्या हुआ? You know, the earliest shrine on Watatsumi Island was not located in Sangonomiya. It was close to the statue of the Seven. Back then, the people of this island recognized the shogun's existence, despite not venerating her as the shogunate do. But after she struck down our protector deity, the shrine was abandoned. Relations between Watatsumi Island and the shogunate have soured ever since. Mistrust has become deep-rooted over time. वो देखिए मैं shrine by the way. I've been hoping to raise all this at the peace talks and discuss it properly. Grievances have to be let go eventually. Your Excellency, what brings you out this way on your busy schedule? Oh my, you're looking a little worse for wear. You need to take better care of yourself, okay? All of our fates depend on you. Thanks for your concern, but I'm fine. Your Excellency, I beg you, heed a word of advice. After all this time fighting the Shogun's army, peace is not something that can simply be declared. If we reconcile with them, the god who once protected us will have died in vain. Come on, it's ancient history. Besides, the fighting is barely over. We should be grateful to be at peace once more. I know, it's just... We should remain strong in these negotiations. We mustn't be too ready to compromise. I appreciate your concerns. I will consider the options carefully and be sure to proceed appropriately. Okay. Wonderful. We're all counting on you, Your Excellency. Your Excellency. Oh, Your Excellency? Well, I'll be... fancy meeting you at a place like this. Do you know, my daughter's enrolled herself in the Shrine Maiden selection process this year. If she makes it into Sangonomiya, I'll be one very happy mother. You're a kind and gracious leader. She'd be in very good hands. I'm always telling my daughter that if she gets the chance to learn from Her Excellency directly, she must make the most of it. I mean, just look at Her Excellency, still so young, but so mature and intelligent. My daughter has always looked to you as a role model. Well, if she comes to Sangonomiya, I'll look out for her. Your Excellency. Boy, am I glad you're here. As you know, agricultural output has taken a pretty big hit this year. Let me bring you up to speed on the latest situation. Oh, Your Excellency, isn't this the captain of Swordfish 2? Will he be based on Watatsumi Island from now on? Your Excellency! Please, remain calm, everyone. I'll get around to all your queries. Though, for the longer ones, I'd prefer it if you could write a report and submit it to the shrine. Then I can respond to each one as and when I have the time. Okay. मैं तो तुम लोगों की होता हूँ। रीनियन से सब लोग दूर भागते हैं। इसके सब लोग पास आते हैं। दोनों एकदम अपोजिट है। जब रेडियन गए थे हम लोग सब लोग उससे दूर भाग रहे थे, डर रहे थे, और सब लोग अब इसके पास आ रहे हैं। ये भी ठीक है। Are you alright? Yes, I'm fine. This kind of thing is water off a duck's back for you, huh? Your Excellency, here you are. There's been a situation. We're still waiting on the delivery of a whole batch of ceremonial items. I'm beginning to worry that they've been stolen. Oh, we retrieved those already. No need to worry. Really? That's fantastic. You never cease to amaze us, Your Excellency. I sorted through all the petitions received recently and placed them on your desk. Also, according to the schedule, you're just in time for your meeting today on the development of the textiles industry. That's today? Textiles industry.
Right now? Yes. Yes, the two young ladies have arrived safely. We're just waiting for you. Too young. I see. I see. I was hoping to take. I was hoping to take a walk around the island with you. But it looks like we'll have to save that for some other time. जिसने दिए देख. Oh, let's rendezvous tomorrow at the entrance to Sangonomiya Shrine. Then we'll go and make preparations for the victory feast. इसकी जब तो दिए बोल दिया तब क्या क्यों लगती है यार. Yay, the victory feast! Just to be clear, we're talking lots of delicious food, right? Right. That's the name of the game. There'll be some Watatsumi Island specialties, which I'm sure you'll enjoy. Great! See you tomorrow then! Okay. See you tomorrow. पर मैं टाइम स्किप करके अभी के अभी आ जाऊंगा. Okay. हम लोग चेंज कर टाइम 10 शायद. ओके इतना टाइम सही रहेगा. हम लोग चेंज कर ले टाइम और जाते हैं हम लोग आगे. Yes. Ceremonial items. I'm beginning to worry that they've been stolen. Oh. हाँ अब देखते हैं. 1 मिनट रुक जाओ. रिकनेक्शन ऑफ OBS. 1 मिनट. अच्छा अभी तक ये हुआ नहीं. 5 kbps. तो स्ट्रीम लैग करी होगी ना. अभी तक लैग करी स्ट्रीम. और आई थिंक अब हम लोग लाइव है पूरे ना. अभी थोड़ी कम ही आ रहा है अभी भी. पता नहीं कब तक रहेगा ऐसा. अब हम लोग लाइव तो है, ये तो गारंटी है. देखते हैं अब क्या सही आ रहा है ना. अभी भी लोडिंग ही हो रही है पूरी स्ट्रीम. पता है पहले से ही बुरा हो गया. एक सेकंड के लिए स्क्रीन चेंज करके देखते हैं. ओके अब शायद सही होना चाहिए. कि कनेक्शन अभी तक पुअर है. कनेक्शन अच्छा करना पड़ेगा मैं थोड़ा सा. ये कनेक्शन तो मेरा सही है. तो ग्लिच फिक्स करने की कुछ देखनी पड़ेगी चीज़ें. कुछ ट्यूटोरियल ये सब देखना पड़ेगा मुझे. क्या गलत है इसमें. तो आज के लिए तो एडजस्ट कर लो. मैं रात को देख लूँगा सही से. Kokomi isn't here yet. That's weird. She doesn't seem like the type to show up late to things. Let's wait a little longer. वो कोई फंस गई होगी गारंटी. How is she still not here? After some Do you time. think she could be in trouble? Yes, of Let's course. go ask that soldier over there. यही होगा गारंटी. यही होगा. क्यों मुझे मालूम है ऐसा ही होता है. Are you looking for Her Excellency? I'm Yes. afraid she isn't here at the moment. I don't know where she's gone. So strange. So strange. Guess we should just call it a rain check then? Not necessarily. If I recall correctly, Her Excellency has made special provisions for such a scenario in her general operational directives. Let me see. Yes, number 98. Should a visitor from afar come to see me, and should my whereabouts be unknown, direct them to proceed southward until they arrive at a tree with purple foliage. The footnote stipulates that this only applies when Her Excellency has made no communication regarding her whereabouts before disappearing. And even then, only when the visitor in question is of VIP status. As far as I'm concerned, you two tick all of the boxes. I keep this directive on me at all times. I'm sure this is the right course of action. Kokomi really does think of everything. All right, let's Alright, find the out place of she read word. about and have a look. और हम लोग जाते हैं नेक्स्ट. What's the hurry? ओके बस पहुंचने वाला. Are you sure this is the right place? It feels like
we keep heading deeper into the middle of nowhere. Hey, doesn't that tree look like the one she described in the directive? ये वही है ना? It looks like there's a way in over there. Let's take a look. Investigate. कहाँ पे था? इस ट्री की बात करिए, किसी और ट्री की बात करिए? अच्छा यहाँ पर। ओके कोकोमी ये भूल गई थी शायद वो, डेंजर में नहीं थी वो। Kokomi! So this is where you ran off to. सो गई वो? We were gonna meet up and get things ready for the victory feast today. What happened? It's you. I apologize. कोई बात नहीं। I'm not feeling my usual self today. कोई बात नहीं। You got sick? We'll go find a doctor right away. No. It's nothing like that. क्या हुआ? मैं जाता जाता हूँ। Just my energy is completely spent. You run on energy? You mean you're like a ruin guard? No, it's just a figure of speech. I'm ashamed to admit it, but I can't always be the infinitely capable person I present myself as. Everyone was asking so much of you yesterday. You noticed? I guess I haven't quite mastered the ability to hide how I'm feeling. I'll keep working at it. To be honest, I'm not really cut out to be a leader. At first, my dream was to read up on military strategy and perhaps become an advisor. Constantly communicating with people, trying to retain their morale, having to read between the lines, making sure everyone gets the recognition they deserve. It's such hard work. एक मिनट। हाँ। My AR is 52. My AR is 52 और बस हाँ मैं AR 52 और क्या बताता हूँ मैं? You're somehow supposed to make people feel wonderful just from being in your presence while also commanding their respect. It doesn't come naturally to me. And truth be told, it's something I never wanted for myself. But because of my bloodline, I was always going to end up being the divine priestess, sooner or later. Like it or not, it's just the way it is. So, whenever I feel overwhelmed, I come here to just lose myself in a book and relax for a while. Don't worry, it doesn't affect my work. I handed over preparations for the victory feast to someone else. I have to make a speech tonight, and I mustn't give the troops any reason to suspect that something could be wrong. This peace was hard won, and I want them to feel at ease. Is there anything we can do to help? एक मुझे देखना है मैं स्ट्रीम का और that something could be wrong. This peace was hard won, and I want them to. ज़्यादा पीछे नहीं है अब मैं स्ट्रीम ज़्यादा पीछे नहीं है। I should be feeling energized again soon if I hold off on work for a little longer. If only there was some way I could listen to a good read on military strategy. I'm sure that'd speed up the process. I was reading a book last time I was here, but I only got about halfway through. Okay. Where did I put it? We'll find it for you. मैं भी सेम चीज़ बोल रहा था। We'll read it out to you to help you recover. मैं भी सेम चीज़ बोल रहा था। You do that बोलने वाला था। for me? Yes, of course. Thank you. वाइफू के लिए कुछ भी। I'm really lucky you came back to Watatsumi Island. Anything for waifu? Whoa! Look at all these petitions! So does Kokomi make time to deal with these even when she's resting? Sangonomiya Events Cash Flow Statement. Consolidated Ishin Annual Senpai Report on Fishing Production. Said AR-56. Watatsumi Island Monthly Maintenance Expenses Breakdown? अच्छा तो खुद का यार बता रहा। This is a lot of work for one person, and
And it's on top of all the directives she has to write and the people she has to meet day to day. बहुत मुश्किल No होती है। wonder she gets burnt out from time to time. इसकी जीन जितनी हार्ड होगी जॉब, या जीन से भी शायद ज़्यादा हार्ड होगी। Let's track down that book and help her feel like herself again. से ब्लड लाइन पुराना हो चुका है ये सिस्टम बाय द वे कोकोमी पुराना हो चुका है। तू फ्री है तो कुछ भी कर सकती है अपने हिसाब से, पर हम लोग बोल नहीं सकते, बोलने का ऑप्शन तो बोलता ही है। वही प्रेस करता Hey, look! Could this be the book she wanted? Swordfish Captain came back today. Energy +4. That's just डायरी है शायद। ओके वो लोग we saw nothing. Give it here. Guess that was the wrong one. डायरी Let's keep जो looking. वो डायरी थी शायद। ओके ऐसे ही यार देख लेता शायद मेरे को लगा। It's gotta be this one, right? Look, there's even a bookmark. None of the other books have one, so she must have finished reading those already. Ooh, it's pretty dense. Paimon doesn't understand a thing. Well, let's take it over and read it to her. Okay, Kokomi, your book. Sangomiya Kokomi. Kokomi, is this the book you wanted? I'm not sure, actually. Could you read a bit out loud? Yes, that's the one. नींद आ रही है इसे। Legend Ajayawal. Said OIIBOI. Oh boy. Kokomi. Well, legend, welcome to my stream, bro. Welcome to my stream. Kokomi. Oh no. Legend Ajayawal. Sleep. Said she face vomiting. यो बस नींद आई तो थोड़ी सी बीमार है वो, बस थोड़ी सी बीमार है। मुझे ये एक मिनट थोड़ी सी पॉज करने दो इसे। पर क्यूट है वो और वो मैटर करता है, पर तभी पुल नहीं करूँगा मैं उसके लिए। और क्या उसका माइनस रेट है एज वाइफू सही हो। Tonight's the victory feast. Not to mention that the peace talks are just around the corner. She's got so much to do. Let her rest a while. You sure that's a good idea? She does look pretty exhausted. Guess there's still some time to go too. Alright, let's keep her company while she rests. Avoid disaster. Protect peace at all costs. The war's over. Things are slowly getting better. Oh. Did you see? What time is it? Did I fall asleep? Yes. Yep, you've been out for ages. It's nearly time for the feast. Legend Ajayawal. She's not cute. Said she not cute. भाई उसकी Legend Ajayawal. आंखें देख ब्रो। Said very good don't pull. हाँ पुल नहीं करूँगा पर उसकी आंखें देख भाई। रोज इस सीन में देखनी है। I can't believe it got so late. उसकी आंखें, उसका फेस क्यूट है। बॉडी नॉर्मल सी है पर फेस क्यूट है उसका। ओके मैं ये पॉज कर देता हूँ। I haven't slept that peacefully in so long. That's gotta be 3 whole energy points right there. Energy Should points? be enough to see me through the peace talks. Thank you. Well, we better get ourselves over there. It's nearly time to light the bonfire. Woohoo! Kokomi's back to full energy! Good to have you back. ओके हम लोग जाते हैं। तब तक के लिए मैं ऑन कर देता हूँ चैट को।
अच्छा ये वाला हो गया ना। अच्छा ये इसके बाद 1-2 और होंगे शायद। फिर और कुछ ना कुछ ज़रूर होगा उसमें, क्योंकि नॉर्मली तो जा नहीं सकता वेस्ट कि बैंड हो जाए। It looks like everything's in place for the feast. But I still need to give a quick speech before the festivities begin. Okay. Oh, how much energy will that take? Do you think you've got enough? Don't worry, I've got plenty. Thanks to you two, I recovered more quickly than usual. That's great! We'll be rooting for you. Welcome, everyone. Today is the day that we celebrate our victory. Recently, our war with the Shogun's army came to an end, and we finally saw the abolition of the Vision Hunt decree. None of us can know what the Inazuma of the future will look like. But tomorrow, I meet with the Tenryou Commission for peace talks. I give you my word that I will strive for peace for Watatsumi Island once and for all. Thank you all for your valiant efforts throughout. Truly, it is only through those efforts that we have been able to prevail in this trying war. This feast is held in honor of each and every one of you gathered here today. I hope all of you get to relax and enjoy our hard-won victory. After a while. Tonight seems to have gone off without a hitch. I'm so glad it's all going smoothly. People tend to be more open when they're in a good mood. Could I ask you to go around and see what information you can gather? Yes. I still have no further leads regarding the issue of potential collusion between the Tenryou Commission and the Fatui. And I'm concerned that something might happen at tomorrow's peace talks. Okay, sure. We'll go ask around. Watatsumi Island is finally at peace, and it's all thanks to Her Excellency, Sangonomiya. और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। Okay, कोई बात नहीं। What's new? Anything to report? Recently, let me think. Well, the biggest thing for us is that we can finally get back out on the ocean to fish. During the hostilities, the open sea was full of warships. We just had to make do with what little fish and shrimp we could get our hands on closer to shore. When the catch wasn't good, we'd all go hungry. The poor kids were crying all day and night, but there was just nothing I could do. We'd go to bed ravenous and be tossing and turning all night long, trying to keep it together until the morning. At least things are finally improving now. I hear you're captain of Swordfish too, is that right? Well, thank you for your service. Here, have a fish. It's freshly caught, so it's a bit fishy. But it's fine. No. We couldn't possibly. Come on, take it. Without you, we'd probably still be going to bed hungry tonight. Her Excellency always teaches us to repay kindness with gratitude. Okay, well, thanks. Come on, let's go talk to some others. Okay, Kokomi. Found anything out yet? Nope. Found anything out yet? Nope. He post. Found anything out yet? Okay, कुछ नहीं. क्या तो कुछ बोल रहा था. Hey there! Care for some fruit and vegetables? Nature's remedy when you overdo the barbecue. What's new? Anything to report? Are you referring to the thing about the Tenryou Commission and the Fatui? Yes. I've heard rumors, but nothing too detailed. It's funny you should say that the soldiers seem excitable, though. I've had the same feeling. See that guy over there? He's been acting strange these days, always shouting and waving his spear around when he's got nothing to do. He scared the heck out of me a few times. It's a miracle the fighting has finally come to an end.
Yeah, I really hope we don't go making any more trouble for ourselves. Sorry, I'm afraid I don't have much information. If you still have questions, you may as well go and talk to him. Sounds promising. Let's go see what that guy's deal is. ओके मैं पहले भी जब कोकोमी से बात करी तब भी देखा था ये ऐसे क्यों हिला रहा है वाला साउंड्स डबल मीनिंग This guy smells of booze. Booze? Huh? What is Wait, don't tell me. Captain of Swordfish 2, right? Yes. You actually came back. I thought you'd abandoned the platoon and made a run for it. Nuh-uh. We would never run from a fight. Is that so? All anyone talks about these days is peace and stability. Do you remember what the most important thing is to the Resistance? Oh, sorry for that. You got that right. What you will. So I'm gonna put you to the test. Time to see if you truly are a bona fide Resistance warrior. I'll answer your questions, but only if you can beat me in a duel. This guy. Elemental power. Tell him to just have a normal conversation. Elemental What do power. you think? Are we gonna do this? Sure, of course. We'll see about. उसे मार खानी फालतू में भाई मैं एलिमेंट्स की पावर रहते बस नहीं है भाई मैंने एक ई टच किया ई पे आजा पास रियली मैं तेरे पास आ जाता हूँ उतने से डैमेज से तुझे लगता मार पाएगा तू मुझे देखो अगर इतने में से मारेगा ना भाई देखो दिन लग जाएगा मुझे मारने के लिए और शायद तब भी मार नहीं पाएगा तो Wind blade. आना है एक लास्ट 15,000 15,225 You're a strong fighter. No wonder Her Excellency chose you. You really do have a warrior's will. Then maybe you can understand us. Captain. Comrade. Will you join us? First you need to tell me what's going on. We made it up. The story about the Tenryo Commission colluding with the Fatui. It didn't happen. It didn't happen. Poor Kokomi's been worried sick. You're telling us you made the whole thing up? What the heck were you thinking? This could send you right back into war with the Tenryo Commission. Yes, that's exactly what we're hoping to achieve. Peace talks? Everyone's been drawn in by the idea. That's why the future of Watatsumi Island is at stake. What's to stop the Tenryo Commission from stabbing us in the back? And what's to stop the Raiden Shogun from issuing another Vision Hunt decree? We are the Resistance. Everything hinges on our warrior's will. We can't trust the Tenryo Commission or the Raiden Shogun, but we can put faith in ourselves. Surely you agree with that? His point does kinda make sense, but something about it doesn't feel right to Paimon. What is goes on to you just want to fight? Yeah, everything you said just now was pure speculation, wasn't it? Are you seriously willing to make up a wild rumor and ruin the peace everyone's worked so hard for, all because of some imaginary situation that may not even happen? Don't take that tone with me, acting like you're above all of this. What would you understand? For the sake of victory, we embodied the warrior's will to the fullest. You understand? We were all in. Now they're suddenly trying to tell us that none of it matters anymore? You'd have me just put down my weapon and start living like an ordinary person, but how can I? How can I when every time I close my eyes, I see the faces of the friends we lost in battle? Every time I see them there in my mind's eye, it reminds me that I can never forgive the Tenryo Commission and never forgive the Vision Hunt decree. I guess you're not one of us. Well, whatever. Go ahead and tell Sango Namiya if you want, but you're too late to stop us now. Too late?
mean? Darn. Doesn't seem like he's gonna answer that one. What are we gonna do? This is really serious. We need to give Kokomi the full story right away. मैं किसी और की वीडियो में देखूंगा यार वापस पहला पूरा कसम किसी और की वीडियो में देखूंगा क्योंकि मुझे बहुत से समझ आई नहीं ये पैसा भरा वो उठा ले भाई ट्रैवलर काम आएगा देखो पैसे गिरे हुए पैसे हम लोग नहीं उठाते कोकोमी What's the hurry? A few things. The whole thing about the Tenryo Commission colluding with the Fatui is baloney. They made it all up. They wanted the peace talks to break down so that they could carry on fighting the war. And they said it's too late to try and stop them, no matter what we do. I see. What the matter, Kokomi? I'm fine. Don't worry. एक मुझे एक चीज़ दे What the matter, Kokomi? I'm fine. मेरी आवाज़ बहुत अजीब है यार. Hey, hello, friend. Welcome to my stream. Welcome to my stream. Vapok official said hi. Hi. Welcome to my stream. इसका बस फेस देखो कौन बोलता है कि क्यूट नहीं है ये कौन बोलता है भाई I am fine, don't worry. This is my fault. If only I'd perceived what they were feeling earlier, it never would have come to this. I think I understand what Kozin means when he says it's too late. The talks don't begin until tomorrow, but both sides have already sent their guards to the location. They are responsible for making sure the area is safe and secure. Safe and secure. I highly suspect that one of Kozin's pro-war co-conspirators will have infiltrated the guards with an intent to reignite hostilities tomorrow during the negotiations. Well, that's no good. Do you want us to head over there now and switch out the guards? That won't work. Firstly, the act of bringing a new team of guards to a neutral negotiation site will put both sides on high alert. It would almost certainly push the pro-war faction into taking action. They would attack the Tenryo Commission's guards and we'd be in danger of war breaking out once again. Not to mention that we have no idea how many of Watatsumi Island's soldiers are involved in this plot. If we change the guard in haste, we face the issue of not knowing who to trust. Okay, मुझे एक मिनट चीज़ देखने दो एक सेकंड We face the issue of action. We have no idea how many breaking out once again. मैं बोला तो कुछ ना कुछ होगा We have ओके मैं यहाँ से आ रही हूँ मैं सोचता भी अजीब है बता रही क्यों ओके हम लोग क्वेश्चन आगे खेलते और अभी रेड पर येलो पे है जिससे स्ट्रिंग की क्वालिटी ठीक ठाक आ रही होगी Sounds like a really tricky situation. So is there really nothing we can do about it? Don't let it worry you. What's done is done. Now it falls to me to devise a counter plan. These soldiers crossed the line, but the blame is not theirs alone. Whatever happens, I will find a way to ensure they do not come to harm. Let's meet here again tomorrow. Okay. तो टाइम आगे करके मैं अभी मिलेंगे हम लोग ओके अब ये हो गया ये प्रेस करते अच्छा अब जो होने वाला ये लास्ट होगा इसका दिया वाला क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देखते क्या करना है हमें अच्छा मैं एक मिनट क्या टाइमिंग क्या है 10 दो बार करना पड़ेगा क्या मुझे हाँ शायद दो बार करना पड़ेगा एक बार इतना करते हैं हम लोग और देखते दूसरी बार भी और बाद में कौन कौन है स्ट्रीम पे अभी ओके ऑफिशियल है शायद और एक शान होगा और इसे एक और आगे लेके जाता है हाँ 10 हाँ 10 4 सही रहेगा ओके और हम लोग
bonfire क्या जाते वापस? Well, the peace talks are upon us. Peace talks How do you upon feel? us. Prepared? Yes. Here, take this. क्या ये? These are some directives I wrote last night. These negotiations are complex, to be sure. But I thought about it carefully and realized there are no more than 187 possible outcomes. What the? I took the liberty of writing them all down. Doctor This Strange? way, you will be able to adapt with speed, no matter how the events play out. Doctor Strange? What the hell? इतनी possibilities कौन think कर सकता है? Okay, Art of War. इतनी possibilities कौन think कर सकता है असलियत में यार? Whoa, this is huge. Let's see. Doctor Fierce Strange ने भी तो ऐसा किया था. violent escalation, armed revolt, coordinated attack, seize hostages. Wow, there are so many. But you've thought of a solution to each one. Hyman suddenly feels a lot less nervous. Glad to hear it. These peace talks are quite exceptional. It is a major step forward both for Watatsumi Island and the Shogunate. But any amount of dissatisfaction within our ranks weakens our negotiating position. We will have to work all the harder if we want these talks to be a success. As the Divine Priestess of Watatsumi Island, this responsibility is, of course, mine to shoulder. But would you be willing to lend me a hand? Of course. Excellent. Of Okay, course. time to head off. Okay, What's the hurry? हम लोग जाते हैं आगे. Catch the wind. और आपको वैलोरेंट खेलूंगा मैं. इसमें एक बार बताना था मुझे. ये तो बहुत दूर है. मैं टीपी से जाओगे फिर मैं. अच्छा दूसरे आइलैंड पे ही है ना. यहाँ पे तो टीपी भी नहीं इसके आसपास. तो वॉक करके जाना पड़ेगा आधा रास्ता. मतलब थोड़ा सा रास्ता वॉक करके जाना पड़ेगा. ओह नाइस. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. What's the hurry? या एक वो है केज है. एक मैं केज को मार्क कर लेता हूँ. हाँ मैं भी केज के एग्जैक्ट ऊपर हूँ. ये केज को मार्क कर लेता है जैसे जब भी की मिलेगी. Ishin Senpai. सेड तो बहुत क्यूट है. मेरे को भी लगता है स्पेशली उसका फेस जो उसके आईज और उसका माउथ है. पर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. और इसने बोला क्यों नहीं? अच्छा पॉज है ये एक पॉज है तो इसने सिर्फ नाम कैसे बोला? Said Kokomi boat cute high upside down face. ओके पता नहीं आधा अधूरा है भाई. क्या सिस्टम है इसका? बाद में हर गर्ल के लिए बोलता हूँ पर मतलब हर वाइफों के लिए बोलता हूँ. कोकोमी का फेस मुझे सबसे क्यूट लगता है. मतलब उसकी फुल बॉडी में अगर बात करी जाए तो. और जब बाल का जब हुआ था ना तो मैं उसकी एक दो फैन आर्ट देखी थी. बाल भी सही दिख रही थी उनकी फैन आर्ट्स में. जितनी रियल में नहीं होती फैन आर्ट्स में मस्त दिख रही थी. Ishin Senpai. Said deep blue eyes. Deep blue eyes. चलते और चलते. मैं भी अपना वो बनाने वाला वीडियो अपना कैरेक्टर बना लो. उसके बाद मुझे सिलेक्ट करनी है और सोच रहा कौन सी रखूँ. मैं तुम लोग मैं तो को स्क्रीन का दिखाता हूँ. स्क्रीन की लास्ट में तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं कि क्या बोलना चाह रहा हूँ. तुम लोगों को स्क्रीन कर दिखाता हूँ मैं. It's been a while, Kujo-Sara. I believe the last time we met was on the battlefield.
Yes, where you dealt my forces quite the devastating blow. But before we go any further, what are you doing here? Before we go any further, what are you? मैं गलत चीज कर रहा हूँ. I am here to witness the place takes. That's right. He's here to bear witness to the proceedings. He experienced the war between us firsthand and has made an enormous contribution towards securing the peace we have today. I couldn't think of a more suitable candidate. Seems reasonable. Then let's get straight into it. Okay, start karo. Chalo shuru karo. The first item is the maritime administration issue. During wartime, we restricted fishing rights for Watatsumi vessels in Narukami waters. Okay. Okay, पहले एक chat पढ़ता हूँ. Said Blue Eyes hypnotize Terry Cardi Imainu. Blue Eyes hypnosis theory. Menu. Honey Singh. We intend to remove these restrictions, but going forward, any of your vessels that fish in our waters will have to pay taxes in accordance with Narukami legislation in order to bring their catch back to Watatsumi. That's fine, but if they're paying taxes, they should also be entitled to protection from the Tenryou Commission while in your waters. Any losses they sustain due to issues of public security will need to be compensated by the Tenryou Commission. Accepted. Let's add that to the peace treaty. I can assure you that your vessels will be quite safe in our hands. इसके हेयर ज़्यादा मस्त लगते हैं यार. क्या लगता है? इसके हेयर तो कूल लगते हैं. अगर से तो और कूल डिजाइन देते ना तो भाई सारा बहुत मस्त कैरेक्टर बनती है. वैसे तो और कूल डिजाइन देते ये लोग तो. उसका ड्रेस कूल होना चाहिए था. क्योंकि हेयर बहुत कूल है. Negotiations seem to be going pretty smoothly. The next item has to do with the movement of people and military authority. In the past, our people have been subjected to lengthy interrogations on arrival in Watatsumi, and the same has been true for your people on arrival to Narukami. Economic cooperation between our islands has suffered greatly as a consequence. Few merchants are now willing to engage in inter-island commerce. Since the war is now over, I propose that we have the Yashiro Commission appoint a business council to oversee trade between our two islands. The problem there is that trade is a reciprocal affair. We'll need to involve merchants from both sides in this process if it is to succeed. We cannot give the Yashiro Commission full authority. Correct me if I'm wrong, but isn't Watatsumi Island facing severe shortages of many essential goods at the moment? Having the Yashiro Commission organize everything centrally would work in your favor. True, we're experiencing some shortages, but we will recover in due course. Between the diverse range of goods we can produce ourselves and our strong trade links with other areas, we are capable of sourcing everything we need. Not to mention that your proposal would require separate talks with the Kamisato clan. If they've yet to sanction it, I believe you are going beyond the remit of the Tenryou Commission's authority. Let's leave that aside for now, then. On to the military question. Watatsumi Island's forces will need to come back under the jurisdiction of the Tenryou Commission. That just isn't feasible. Not in the short term, at least. With all due respect, feasibility doesn't come into it. The Tenryou Commission alone has ultimate responsibility for Inazuma's national security. We cannot allow Watatsumi Island to be the sole exception to this rule indefinitely. ये लोग अपनी बात करें, हम लोग अपनी बात करें, ये भी ठीक है. You Kujo scum! Colluding with the Fatui isn't low enough for you already. You just want to take everything away from us. ये यहाँ पे रुकिएगा इसके फेस के ऊपर. Comrades, never trust the Kujo. Let's get them. क्या हुआ भाई? Protect Madam Kujo. क्या हुआ भाई? ऐसा क्या हो गया? 5 minutes. कैश पकड़ा. Number 16. No, wait. 67? Or is it 73? Oh no. Which one is it? Oh no. कुछ बोल रहा भाई कोकोमी.
Stop. रुकने को बोल उन्हें. आज एक सारा ने रुकने को बोला, तू भी रुकने को बोल. ये फर्क नहीं पड़ता कोकोमी को. Kokomi, which scenario number is this in the directives? The last one, but hold off for the moment. Stand down, Tadakatsu. Fight हो गई क्या? Situation has changed. Please stand by for further orders. Rest assured, I am fully aware of your concerns, but I will deal with the situation from here. Madam Kujo, this is rather serious. I believe you owe Watatsumi Island an explanation. Excuse me for a moment. Nobody makes another move until I have finished investigating. You two, here, now! ये हुआ क्या अचानक? मुझे पता नहीं लगा क्या हुआ अचानक. Speak! Traveler Collusion sipping with again. the Fatui? Is this true? Traveler simping again. Okay. अच्छा इन लोगों ने शायद कुछ गलत किया क्या? I wouldn't exactly call it collusion as such. We were approached by a few Fatui. They mentioned a potential cooperation to keep the war against Watatsumi Island going. At the time, I felt like we could give it a try. After all, there'd be nothing to lose. But we were extremely careful. We didn't agree to anything. We just said they could maybe start by heading to Watatsumi Island and stirring things up a little. Then we'd see how it went. With respect, ma'am, there was no collusion. It was just a one-off conversation. How anyone from Watatsumi Island even found out about it, I have no idea. That's enough. When we return, there will be consequences. Might I remind you that this is the Fatui? Have you completely forgotten what they did to us? You should be having no interaction with them whatsoever, let alone entertaining offers of cooperation. So, what did they want out of it? The Fatui's main forces have already left Inazuma. So? The few who approached us seemed like they wanted to settle a score for their boss. Oh, her subordinates. So they're out for revenge. They want to keep Inazuma in a state of turmoil. One day, I will hunt them down. Every last one. We bear responsibility for this issue. My sincere apologies. I have my own negligence to blame for this state of affairs. Please, grant us another chance to continue the peace talks. तो पता है जब बारिश हुई तो तभी मैं समझ गया था कुछ ना कुछ होने वाला है. जब बारिश स्टार्ट हुई थी तो मैं समझ गया था. But of course, Madam Kujo, I have every confidence in your ability to resolve this situation. For the time being, however, there is evidently some discord within the Tenryou Commission's ranks. I would therefore not feel comfortable releasing Watatsumi Island's forces into your command at this time. It seems that I must acquiesce. I will lay this issue aside for now, but we shall revisit it as soon as the Tenryou Commission has resolved our internal issues. As for the trade issues we raised, I will discuss options with the Yashiro Commission and make sure both sides have ample participation in the final arrangement. Seems like Kujo-Sara's on the defensive now. These negotiations should be smooth sailing from here on out. Here and out. Okay, I never knew the grand strategist of Watatsumi Island was a skilled negotiator, as well as a formidable commander. I hope that when we meet again, we can continue these sit-down discussions. Settling our differences on the battlefield is rather taxing. I think we can leave things there for today. Once I get back, I will conduct a thorough investigation into the Tenryou Commission's internal issues. I should inform you that we took out a Fatui camp recently. I suspect that before long, they will attempt to re-establish contact with your people in the hope of procuring some assistance. I recommend you say and do nothing on the matter for the time being, lest you tip them off and they disappear. Wait for them to come to you. That way, you can capture them all in one fell swoop. I will bear this in mind. Okay. Thank you. I shall take my leave now. Until we meet again. Your Excellency, Let's discuss it after we get back.
अटैक क्यों किया था कोकोमी के जो कोकोमी के साथ इन लोगों ने अटैक क्यों किया? मुझे ये समझ नहीं आया। कोई चैट? नो चैट। मुझे ये समझ नहीं कोकोमी के साथ अटैक क्यों किया? जो कोकोमी के साथ लोग थे और लोग जाते हैं यहाँ पे। मुझे पूरा देखना पड़ेगा किसी और की स्ट्रीम पर। The wind. एक बार मुझे एक चीज देखने दो, मुझे एक चीज देखने दो चैट के। मैंने अभी एक चीज गलत की थी इतनी देर से। Zombie killer said hi. अच्छा अब सही है। ये पाइमन कहाँ पर है? Ishan senpai said Ujjwal आया था क्या? हाँ उज्जवल आया था, गया पर शायद अभी गया, वो आया था शायद। कोकोमी से बात करते हम लोग। Your Excellency, you knew? I have already been informed on the reasons for your actions. You believe the Tenryou Commission to be untrustworthy and sought to sabotage the peace talks and reignite the war. Fortunately, the end result exposed and thwarted a secret Tenryou Commission plot. Yet, this was purely incidental, and the end certainly did not justify your means. But Your Excellency, so many comrades have sacrificed themselves in the line of duty. If we stop now, aren't all of our efforts going to waste? I want to keep fighting. I want ultimate victory, even if it means I have to pay the ultimate price. तो सब लोग मरेंगे ना इससे अच्छा तो और लोग ना मरे इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है ना. I understand your sentiments, but you cannot simply impose your will and expect others to bear the consequences. In your dream, said, "Can you help me with dragon spine?" Ishan senpai I will. said, "Ujjwal ko cute ka MTLB नहीं था." Cute का मतलब भी नहीं पता. हो सकता है वैसे सबके परफेक्ट डिफरेंट रहते हैं ना और मैं ना यार सॉरी आज तो नहीं हो पाएगा. आज मैं खेल नहीं पाऊंगा. सॉरी ड्रैगन स्पाइन तेरे साथ नहीं खेल पाऊंगा आज मैं. कल खेलता हूँ भाई तेरे साथ मैं इन योर ड्रीम. ओके तो हम लोग आगे कैसे खेलते हैं. During the war there were highs and there were lows, and in the end there was a glorious victory. For you, perhaps the experience was one of great excitement. But you saw nothing of the countless others who will remember the war quite differently. Most people suffered terribly through each day. Watatsumi Island's people yearn for peace because they have long since given all they had to the war effort. They are tired of treading water and don't need you dragging them back underneath once again. But... I understand, I do. And the fault is not yours alone. It was largely an oversight on my part. I taught you to nurture a warrior's will, but never how to let it go. It's not your fault, Your Excellency. It was ours. Our selfishness. Either way, we are ready to accept sentencing under martial law. Very well. Then I hereby declare... Okay. कोई कुछ बोल के दिया. That as of today, I am founding a new secret corps of the army. This division will be responsible for keeping Watatsumi Island safe and secure, neutralizing any and all threats to the peace of our island. You and your comrades will all be welcome to join, but be warned, the training will be grueling. Perseverance and grit will be in high demand. Your Excellency, what are you saying? I have concluded from today's peace talks that the Kujo clan cannot achieve absolute peace and stability in the near future. Many seek peace, but there are still those who pursue war. It is right that Watatsumi Island moves towards peace, but we must still retain a defensive capacity. Those whose warrior's will is alive and well, I invite you to embark on the most challenging training regimen of your lives. I don't want to hear from any of you again until all of you can take on 2 shogunate samurai at a time. Thank you, Your Excellency.
All right, dismissed. Go and report to General Goro. And remember, there can be no more insubordination. And if there is, there will be no more leniency from me, whatever reasons you may have. Yes, ma'am. From now on, we will focus on our training. Thank you for this opportunity, Your Excellency. We'll report to General Goro right away. May have. Okay, ये हो गया अब कोकोमी what do in बाद. I think that's finally everything in hand. I can feel my energy levels starting to drop. Meet you back. Meet you back at the hideout for some rest? Yes, of course. और हाँ ईशान तुझसे एक और मुझे बात करनी थी तो वो बताता हूँ मेरे को पहले इतना खेलते फिर मैं तेरे को बताता हूँ हाइडर तो अच्छा ओके बाहर तो हाइडर के अंदर ओके Thank you for everything. With your help, peace has been restored on Watatsumi Island once more. How your energy level? Recovering. Slowly, but surely. I should be raring to go before too long. Today was a reminder that I don't cope well in situations with lots of people. I've improved, but I still get nervous when more than a handful of people are involved. I think I might get Goro to handle the negotiations next time. Do you think so? To be honest, I'm still a long way off what's expected of a divine priestess. In the past, I was concerned only with winning the war, restoring peace, and making sure everyone could live a happy life. But I realize now that wasn't going far enough. People have all kinds of aspirations, and just as many measures of happiness. I have a long way to go, but that's okay. That's okay. If I can't make the journey in one giant leap, I'll just have to settle for taking it one small step at a time. In short, I've still got some maturing to do. Could you stay here on Watatsumi Island? Yes, of course. To keep me company for a while longer? You want a hug? Okay. खत्म कहाँ गई वो कहाँ गई वो ओके वो गई और ये खत्म होगा कैसे हमारा ओ नो खत्म हो गया यार ये अभी तो सीला चालू है यार ओके कोई बात नहीं तो ये तो हो गया हम लोगों का और क्या बचा हुआ आज हमारा और देखते कि और क्या बोला विश कर ओ हाँ विश करता चैट में तुम लोग ऑन कर देता हूँ ईशान सेंपाई said wish क्या कहाँ करता हूँ मैं विश पता नहीं जो अभी मैंने ये ऑन किया है ना उसकी आवाज़ इंडियन लिखी हुई है उसके बाद इंडियन जैसी नहीं है पता नहीं क्या सीन है एक और इंडियन ये है वो कभी और ट्राई करेंगे उसकी और ख़राब है शायद श्योर तुम्हारे से कौन सा एआई बेस्ट है जो अभी में लगाया जो अभी आ रही है फिर जो पहले था स्टार्टिंग में था एकदम और हाँ मैं विश करने आया था पर मैं सोच रहा हूँ कि 10 विश एक साथ करूँ तो मैं अभी तो बचा के रखूँ या फिर मैं एक चीज़ अगर मैंने एक क्लिक नहीं क्लिक हो गया क्या क्लिक हो चुका था वो नो माय बैड मैं पीछे बहुत स्लो कर रहा है यार लैग कर
माय बैड। देखो पहले हिस्ट्री देख ली। हाँ ओके, एक मिनट, पीछे बहुत स्लो वर्क कर रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ बैकग्राउंड में ऑन है क्या? नहीं, पर वो बताएं, एक सेकंड के लिए हुआ होगा कुछ। ओके, पहले हम मुझे हिस्ट्री देखनी थी अपनी, और 1+ करेंगे। और हाँ, मैं अब से सोच रहा हूँ कि 10 विश करूँगा हमेशा इस लोड में। तो हाँ, मैं हर बार 10 विश करूँगा। पहले एक बार ये, हाँ मैं बोल रहा था, पहले अगर ये 8 विश और हो जाए, उसका मैं 10 विश करूँगा हमेशा, ये 8 विश के बाद। तो देखते हैं अभी कुछ। नो, कुछ नहीं है। जैसे अब आएगा ना कुछ, उसके 10 विश करूँगा डायरेक्ट मैं उसके बाद से, और मैं उसे शॉर्ट बना के अपलोड करूँगा। ईशान सेम्पाई said single oil 10 wish में फर्क नहीं है। हाँ, फर्क नहीं है, पर मैं प्लान तो सुन पहले, और उसके मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगा जिससे मुझे थोड़े से व्यूज आ जाएंगे और थोड़ी रीच मिलेगी, इसलिए मैं 10 विश करूँगा। फर्क तो नहीं है, मुझे भी मालूम है, तो उससे मुझे तो रीच मिलेगी, और उससे मैं शॉर्ट बना के अपलोड कर सकता हूँ उसे। कितनी हो गई विश? मैंने कितनी विश कर दी? 5 हो गई ना शायद। तो जैसे ही मुझे 4 स्टार मिलेगा नेक्स्ट, उसके बाद से मैं करूँगा ये। मुझे कितने और चाहिए? 30 और चाहिए विश के लिए। कितनी विश हो गई अभी मेरी? 1 मिनट, रीलोड। अच्छा, अभी नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, 5 विश हुई मेरी। कितनी विश गिन के बताने को मुझे? क्यों अच्छी खासी विश की मैंने यार। What's the hurry? मुझे बता कितनी विश की मैंने। एक और विश करते हैं हम लोग। एक में वो देखने दो, रिमोजम्स किससे मिल सकते हैं हमें। कौन सा लग रहा है? या फिर डेली, अच्छा डेली मिशन तो खत्म हुआ ना मेरे। हम एक और विश करते, फिर स्ट्रीम एंड करते हैं हम लोग। ईशान सेम्पाई said 5 हाई हुई SYD। हाँ, 5 हो गई, और एक पहले से 6 हो गई, मतलब 4 और चाहिए 4 स्टार के लिए, मतलब मैक्सिमम है वो। पहले भी मिल सकता है हमें 4 स्टार, पहले भी मिल सकता है। देखते हैं अगर इन तीनों में से कौन सा है। रोजारिया अभी, जिंगशू है, और एक और कौन है देखना पड़ेगा। रोजारिया, जिंगशू, और मैं 50-50 हारनी है इस बार, क्योंकि ये 4 स्टार वाले में भी कहते हैं 50-50 रहती है। 50% चांस है कि तुम इन तीनों से कुछ मिलेगा, और 50% चांस रहता है तुम्हें रैंडम कैरेक्टर मिलेगा इन तीनों को छोड़कर। रोजारिया, जिंगशू और बेडो। ईशान सेम्पाई said Cryo next is वाला always 4 far star। more effective in the rain. नेक्स्ट वाला 4 This is स्टार going to हो get सकता interesting. है। देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। हो सकता है 4 स्टार पर, हो भी सकता ना हो, क्योंकि ये मेरी कितनी विश होगी? 7th विश होगी ना मेरी। 10th विश पे गारंटी देता है 4 स्टार, ये तो मैं 7th विश होगी। बस यही चीज कैसे, यही चीज तो अच्छा ईशान होगा। सेम्पाई said TUJ मोना मिलजी next wish में तो क्या करेगा? बस इसे यूज़ करूँगा, ऑफ कोर्स हम टीम में रखूँगा, और ट्रैवलर को बाय बाय बोलना पड़ेगा हमें, और ऑफ कोर्स मोना को यूज़ करूँगा मैं। तो मोना को यूज़ करूँगा ऑफ कोर्स। तो मैं 3 बार बोल दिया, पता नहीं क्यों। ठीक, क्या है टेक 2 कहाँ पर है ये? यही मोचो, इसका नाम है क्या? अच्छा, इसका नाम है ये। तो अगर मिल गया तो हाँ, उसे यूज़ करूँगा ऑफ कोर्स मैं। अच्छा, टाइम चेंज करना होगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी है? हम लोग चेंज कर टाइम, और टाइम, और अगर हो मोना मिल गया तो भाई मैं बहुत खुश होऊंगा। चलो चलते हैं इन लोगों को, और उसका क्वेस्ट लाना चाहिए, और मोना या बाकी जो पुराने कैरेक्टर का क्वेस्ट लेके आना चाहिए इन लोगों को। देखिए अभी जो क्वेस्ट है
स्टोरी क्वेस्ट कहते एक ये नहीं, यहाँ पे नहीं आया था मुझे। हाँ यहाँ पर आना था। मैं पीसी स्लो वर्क कर रहा है आज, ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है। जब तुझे ईशान सेम्पाई रीड किया था मैंने, said Jati UJPK का मोना माइलगी। जब तुझे पक्का मोना मिलेगी भाई, बोलने से नहीं होता ना, और ऐसा पिटी हारना होगा। और तक पिटी तो रीच करने बहुत टाइम है मुझे, पिटी रीच करने में। और मैं ये बोल रहा था कि इन लोगों के पास एक ही क्वेस्ट है, इन लोगों के और क्वेस्ट लेके आने चाहिए। जो पुराने कैरेक्टर्स है, एम्बर, काया, लीसा, रेजर, रेलू, इन सबके और क्वेस्ट लेके आने चाहिए। इन लोगों क्लियो और जीन को तब भी एक बार लेके आ गए थे, वेंटी को भी लेके आए थे, जो कि मोना एलबीडो को जाया था, उसका क्वेस्ट दीजिए किसी को। यूला, सांगलिंग का तो आ ही रहा ना। जिंगशू का बहुत छोटा सा रोल था, क्योंकि चाइल्ड, इन सबके क्वेस्ट वापस लाने चाहिए, क्योंकि जो पुराने कैरेक्टर्स हैं थोड़े से मॉन्स्टर लियो के, इनके क्वेस्ट वापस लाने चाहिए यार। ईशान सेम्पाई ये स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। said सबका एक्ट 2 आएगा। सबका एक्ट 2 आएगा, जल्दी आया। मैं खेलना चाहता, एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मेन जो मेन कैरेक्टर्स है, जैसे कि एम्बर, काया, लीसा, रेजर, डेलुक, मोना, ये कैरेक्टर्स का आना चाहिए यार मेन तो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स थे एकदम, मोना नहीं थी पर समझ में मोना की क्यों चाहिए। और जीन का आ चुका, पर जीन का एक और आना चाहिए। ओके, और टाइम चेंज करना है ना। हाँ टाइम चेंज करना हम लोगों को 18 टाइम। अच्छा हो गया ना टाइम चेंज। ईशान सेम्पाई ओ मैं कहते बता said Mondstad में quest किया and Ika Alheimza है। मोस्टर क्वेस्ट, हाँ पता है, क्योंकि भाई उसके सीनरीज बहुत ज़्यादा मस्त है भाई। सही टाइम तो है 18 और उसके बीच में ही तो है। एक और सर्कल ले लेते शायद, क्योंकि भाई 18 और उसके बीच में, 18 और 21 के बीच में ही तो ही है। कहाँ गया वो गायब हो गया। क्योंकि अगर तीनों प्लेसेस में मॉन्स्टर बेस्ट है। ऐसे मारना इनको। Dodge this! There is no escape! This moment will be frozen in time. Freeze! Dodge this! Freeze! My blade! Oh, so sorry. You win! Cool it! पर मैं डिप्रेस हो जाऊंगा यार। कि भाई मेरी लाइफ कैसे, उनकी लाइफ कैसी है। Don't get frostbite. Freeze. कि मैं उधर स्ट्रीम करा। Cool it. Let it rain. Freeze. कितने भाई ये, कितने हो तुम? Shine down. This moment will be frozen in time. Dodge this. Freeze. Cool it. कितने हो तुम लोग यार? Freeze. भाई ये हाई स्कूल एनिमे देखूं तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा कि भाई इनकी लाइफ इतनी अच्छी और मैं
मैं कैसे लाइफ जी रहा हूँ मैं वो लोग आराम से चिल कर रहे गर्ल्स के, और मैं दिन में 2 स्ट्रीम कर रहा हूँ और मेरे आसपास कोई भी नहीं है, ना कि फ्रेंड्स है ना कोई है। और तभी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ इसलिए, और मैं स्कूल जा नहीं सकता। बचपन में लगता था कि स्कूल कौन जाएगा भाई, पर अब लगता है कि जाना चाहिए यार, क्योंकि अभी 2 साल ही बचे हुए और जाना है मुझे, पर नहीं जा सकता अब। इसलिए सोच सकता लॉकडाउन ख़त्म हो जाए जल्दी से और मैं जाऊँ कहीं से। और 30 प्रीमियम मिल गया हम लोगों को, और उस एनिमे का नाम मुझे याद नहीं है पर कुछ तो है, वो बताऊंगा देखो बाद में। और हमारी विश और 4 स्टार नहीं मिला है, नहीं 7 4 स्टार चल दे। और बैनर, अच्छा ये बैनर चेंज हुआ पर ये नहीं आया, ये विशेष नहीं आया। 8 डेज और है इसमें, अगर बैनर चेंज होता तो ये भी आ जाता है, ऐसा नहीं है शायद। तो शायद आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और देखते हैं हम लोग आगे। और कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, देख लो। शायद और कुछ भूल ही रहा हूँ मेरे हिसाब से। हम लोग क्वेस्ट कलेक्ट करते और जाते हैं। फिर कितनी देर की स्ट्रीम होगी मेरी? मेरी स्ट्रीम अभी भी यार स्टूडियो में तो भाई यूट्यूब के क्या ग्लिचेस है यार। स्टूडियो में दिखा रहा है मेरी स्ट्रीम बंद है। मेरी स्ट्रीम बंद है क्या अभी असली में? ना चालू हो गई, लोड होने दे वजह से। ओ ना शायद बंद हो गई क्या स्ट्रीम? 1 मिनट, नहीं शायद बंद नहीं हुई। ओके हम लोग यहाँ पहुँच गए। टेलीपोर्ट होगा, नहीं स्ट्रीम बंद नहीं है तो मैं बोलता रहता हूँ। लैग। और ये इसके ड्रिंक का मतलब कुछ होता है क्या? बाल के ड्रिंक का कुछ मीनिंग रहता है क्या कि कुछ जिसके 6 बॉल्स है यहाँ पर, इसका कोई मीनिंग है क्या? ओके नहीं मेरी स्ट्रीम बंद नहीं हुई है, मेरी स्ट्रीम बंद नहीं हुई है। यहाँ नहीं आना हम लोग, यहाँ जाना है। ओके ये हो गया। तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए किल आउट। ओके ये पुराना डायलॉग था मेरा, पर बाय बाय।